Center of Pakistan and International Relations Islamabad hosted an online webinar, titled Featuring Successful Startup Founders, Exclusive Interview, Series with Successful Founders. Ms. Amna Malik, President COPAIR and founder of the Startup Pakistan was headed the participants of the webinar session. The program is organized with the collaboration of COPAIR and its initiative of Startup Pakistan. Startup Pakistan aims to explore, train, mentor and guide young entrepreneurs through online programs on starting businesses using ICT, getting involved in tech and innovative initiatives and attracting potential investors. Hello, good evening everyone. I welcome you all on the behalf of Center of Pakistan and International Relations. I am Awais Siddiq, the project coordinator of Center of Pakistan and International Relations. So I should begin shortly by introducing the COPAIR, Center of Pakistan and International Relations, is a policy advocacy and project implementation non-partisan think tank. It's based in Islamabad and we're working on multiple projects, including the diplomacy, the economic empowerment of the women and the youth of Pakistan, the skill development, and numerous other projects related to the national security and foreign policy. So Ms. Amna Malik, as you all know, she's the president of the Center of Pakistan International Relations. She's leading this think tank from last several years. So in the wake of, surging needs of among the business communities and the young innovative idea creators, COPAIR board pays a special attention to them, and especially by connecting them, by harnessing their potential through providing the seed funding, angel fundings, and fostering their projects in our incubation center, Startup Pakistan Incubation Center. The Startup Pakistan is a project of Center of Pakistan for the entrepreneurial and the youth skill development of Pakistan. It's a platform of the learning for the youth. The session hosts are Mr. Usman and Sadaf Usman started the program and introduced the four guest speakers of the session of startups. Mr. Usman asked questions during the session on their entrepreneur's journey. Nadeem Jahangir, company founder of Irtash. He talked about his struggles, journey and his startup. Irtash is a non-profit and non-government organization. Its aim is to screen out children who are in their initial stages of leukemia for early treatment. Nadeem Jahangir here. Irtash basically is an Urdu word which means resonance, vibration, and we call it a hope of life. And we basically chose this word for this venture. We wanted to create a resonance, a hope of life in rural areas where we have stagnant healthcare conditions. So इस concept को लेकर हम आगे बढ़े इर्ताश के, और इसके पीछे एक inspiration है. जो viewers मुझे देख रहे हैं, मैं उन तक बताना चाहूँ कि हमारे रूरल एरियाज़ में हेल्थ केयर कंडीशन बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं कि अनसफिशिएंट है, और इतने प्रॉब्लम्स हैं जिसके अंदर जो रोज़मर्रा के जो लोग हैं वो हॉस्पिटल में उनके एक्सेस नहीं है, क्लिनिक में बहुत प्रॉब्लम्स हैं. इसी तरह से हमने जो ये मॉडल स्टार्ट किया था, ये basically it was based on those patients which are suffered from leukemia. It is a form of blood cancer. So the model was to diagnose we were basically working for the early diagnosis of leukemia suffered children from rural areas. And then with the passage of time, we include other hematological disorders, means के दूसरी खून से related जो बीमारियां होती हैं उनको फिर हमने इस मॉडल में ऐड किया. अच्छा, मॉडल ये था कि हम अर्ली डायग्नोस करें. सर्टेनली WHO की रिपोर्ट भी है 2018 के हिसाब से कि आप अर्ली डायग्नोस करेंगे तो ट्रीटमेंट ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, लेस एक्सपेंसिव होगा और लेस कॉम्प्लेक्स होगा. तो हमने इस चीज़ को देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म हो जिसमें हम रूरल एरियाज़ में जाएं, मेडिकल कैंप्स लगाएं, वहाँ पर जो पेशेंट्स हैं जनरल फीवर के या कोई ल्यूकीमिया के, क्योंकि हर डिजीज़ की अपने सिम्टम्स होती हैं, तो क्यों ना हम उनको एक हमारा डॉक्टर्स का पैनल होगा और उनको इस एग्जामिन करें. अगर कोई इस सोफिस्टिकेटेड बीमारी में मुब्तला है बच्चा, तो टाइमली हमें पता चल जाएगा एग्जामिनेशन से, और उनको वहीं से हम पिक करें, उनकी लैब रिपोर्ट्स चेक करें, कंफर्मेशन के बाद
हॉस्पिटल, टर्शरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट करें और एडमिट करा दें। मींस कि जो बैरियर है रूरल और अर्बन के दरमियान में फैसिलिटीज का, हम उनको रिड्यूस करना चाहते थे। Usman Pasha, CEO, OSAM. Usman Pasha is the CEO of Automatic and has great experience in the tech sector, primarily focus on edtech. He started his venture with one product and gradually kept expanding. Pakistani youth is developing the skills required to develop solutions to these problems which can be monetized. Again, my name is Usman Pasha and I am the CEO of Automatic primarily. Awesome is an offshoot of Automatic. Automatic is an IT services company and Awesome is a product-based company जो कि education sector को address कर रही है. So basically it started off about 8 years ago जब हम लोगों ने एक I was all alone और मैंने एक admission system बनाना शुरू किया था. और मुझे कोई आईटी का बैकग्राउंड नहीं था, मैंने सारा ऑनलाइन बैठ के सीखा कि किस तरीके से कोडिंग की जाती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती क्या है, एंड वहाँ से करते कराते मैंने कुछ लोग भी हायर किए थे बट अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट वर्क आउट। और इवेंचुअली अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू मेक अ प्लग एंड प्ले सिस्टम, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जरा बिजनेस एनालिसिस में था, आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मार्केट। और वहाँ से फिर I was able to develop this system and sell it in England to Muslim schools. That was my first market. वहाँ से चीज़ शुरू की और वो बिल्ड होती रही, बड़ी होती रही। जब वही सिस्टम पाकिस्तान लाने की कोशिश की तो पता चला एडमिशन्स तो बहुत दूर की बात, वो तो बहुत अभी लो लेवल के सिंपल मैनेजमेंट वाले फाइनेंशियल्स जिस तरह है, फीस मैनेजमेंट है, अभी तक तो वो ही ऑटोमेटेड नहीं है। So there are more than 45,000 schools in Pakistan, not government, private schools, और उसमें से 95% do not have a system in place at all. उसमें से कुछ जो हैं अभी भी रजिस्टर्स पे चल रहे हैं, एंड कुछ के लिए सिस्टम इज सिंपली एक्सेल के ऊपर हर चीज मैनेज करना। स्कूल्स के साथ काम करना शुरू किया, एंड जो इंग्लैंड में चीज बनाई थी वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान में अप्लाई नहीं कर सकते थे, हमें बहुत ज्यादा अपने सिस्टम को फाइन ट्यून करना पड़ा। तो पहला हमने वहां से स्टार्ट लिया। हमें जो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक्शन अच्छी मिली वो हमारे फाइनेंशियल मॉडल की वजह से मिली थी, और वो फाइनेंशियल मॉडल हमारा प्राइमरीली ये था कि वी सेड कि वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज द स्कूल अ सिंगल पेनी। इनफैक्ट हम हर स्कूल के साथ पार्टनरशिप पे जाते हैं। सो व्हाट वी डू इज द स्कूल सेज okay fine, we've got 27 modules, we need 10 modules। अब उस 10 modules के हिसाब से हमें अपनी कॉस्ट पता थी मंथली, उसकी रनिंग की कॉस्ट, और वहां से हम लोग एक मॉडल बना लेते थे स्कूल के साथ मिलके, जहाँ पे होता था कि स्कूल कोई पैसे नहीं दे रहा, और जो पेरेंट है, जो कि लेट्स से एक स्कूल की फीस है 10,000 रुपए, तो हम उस 10,000 के अंदर 50 रुपए ऐड कर देते थे। सो ना 50 रुपए ना पेरेंट को खलता है, स्कूल को अपनी चीज मिल जाती है, हमें अपनी फाइनेंशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे मिल जाते हैं। तो वो डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम, डिपेंडिंग ऑन मॉड्यूल्स, डिपेंडिंग ऑन ब्रांचेस, इस तरह के डिफरेंट वेरिएबल्स होते थे। एंड ये वो स्कूल्स थे जो जिनके पास फंडिंग नहीं थी। अब फॉर एग्जांपल मैं ए लिस्ट स्कूल्स को पकड़ूं, जिस तरह रूट्स है, बीकन हाउस है, इस तरह के स्कूल्स डिफरेंट है, उनके पास फंडिंग है, उनको इस तरह के मॉडल में इंटरेस्ट नहीं। Umar Kamar, company founder of EO, I'm certain about is that the future of ELO is all about relationships. If you want a positive future, then you need to have positive relationships with your employees, suppliers, and customers. I was studying abroad, and I come from a textile family. Everybody around me has something to do with textiles. Either they have looms, or they work in the cotton trade, or they are involved in bed sheets export, or garments export, or denim export. So in my case, it was my father who runs a garment manufacturing unit in Islamabad. And as soon as I finished my degree, he wanted me to come back and join the family business. And I delayed the process for a couple of years, but eventually I came back to Pakistan and joined the family business. But during that time, we were not working in retail in the country. We were not focusing, we didn't have any brands, or we didn't have any shops. We were just focusing on exports. So we were just working with some companies in UK and Europe and exporting our t-shirts and polo shirts there. But
when I came back, I saw that there was a retail revolution in Pakistan. There were a lot of brands like Khadi and Junaid Jamshed and Outfitters and Breakout doing very well in the Pakistani retail space. So I wanted to do something in the retail space because I had that advantage of having my father's factory to work there. So I convinced my father and I said that I want to start a brand. And he was like, okay, go ahead and make yourself a brand. So when I was, so at that time, I got a merchandiser and I started working on these branding for my brand. Like I had a merchandiser and we developed the whole range. But when it was time for placing the order with the factory said we are fully booked until April. So I placed an order in November and they said that Jahangir Ahmad, CEO Bera. Jahangir is the founder of one of the most talked about brand Bera. He envisioned the concept in earlier 2016 along with other co-founders and merely in 9 months he launched it successfully. I wouldn't be here if my team would not support me. Ji, Assalamualaikum everyone. Thank you Sadaf and Usman for this opportunity. मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि Bera जो है basically it's not an e-commerce startup. It's a traditional product brand. What we want to do is कि जो हमारा पाकिस्तान का cultural product है उसको हम premium quality में दुनिया के सामने लेके आएं. And we want to start a trade business और हमारे पास modern जो technologies available हैं या जो modern platform था वो e-commerce था. But we are a traditional product brand actually. So Peshawari chappal जो था वो हमारा पहला product था and 2016, 15 and 16 में हम लोगों ने उसके ऊपर अपनी research शुरू की थी and 2 साल properly हमने research की थी. उस वक्त हमने एक e-commerce platform launch किया था with the name of dealskpk.com जो कि best startup of the year winner भी था 2016 में आप ही के platform पे हमने win किया था. उस पे हम लोग research कर रहे थे to explore the e-commerce industry के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो किस तरह काम करती हैं. So हमने अपना पूरा जो e-commerce का cycle था उसको देखा, उसको समझा, उसके लॉजिस्टिक्स को समझा, उसके कस्टमर को समझा. पूरे उस साइकिल को समझने के बाद जो है हम लोगों ने अपना ये ब्रांड नेम जो बेरा है उसको लॉन्च किया 2017 15 जनवरी को. और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर इन 4th ईयर और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम लोग 6 to 7 कंट्रीज में जो है वो काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा चल रहा है. जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट था वो हमारी Center of Pakistan and International Relations working on research and development and diplomacy, peace, global issues like human rights and women rights.